So in the last session, we had an introduction to Excel. हमने एक overview sort of लिया था कि एक तो interface क्या है, and then we started experimenting with some formulas and also some filtering like this. So ये top पे आपके buttons आ रहे हैं. We also tried to experiment with some of those filters there. ठीक है? So the plan for today is going to be that we focus on functions and formulas for now. ठीक है? तो सबसे पहले हमने कुछ एक standard जो है वो processes हमने last time discuss किए थे. For example, formula type करने के लिए आपको क्या-क्या requirements होती हैं, syntax किस तरह का चाहिए होता है. So we're going to build on that today, and we're going to discuss some common formulas or functions that exist in Excel और उनको apply करके कोशिश करेंगे if you're able to understand them or not. ठीक है? So first of all, I'm going to start with some very basic calculations, right? So Excel में जो formulas हैं, they're very similar to so everything that you can, for example, do in a calculator, inside of a calculator or any type of calculator, you can do it in Excel. So आप किसी भी तरह का formulas अब सारे वो जो है operators यहाँ पे use कर सकते हैं. And the process we discussed last time was कि आप कोई भी formula start करने से पहले, आप कोई भी calculation करने से पहले, the first step is कि आपको ये equal sign से start करना हो. ठीक है? आप equal sign से start करेंगे, and then you're going to continue with that formula. So I'm going to add some rows here. So remember what the method for that was. मैं यहाँ पे right click करूँगा column के header के ऊपर, and then I can click on this insert button, and then I can add a few more rows by just pressing the F4 button. Okay, F4 क्या करता है? आपके last जो भी आपने action किया होता है, it repeats that action. ठीक है? So now what I want to do is okay, I want to add some numbers from it. ठीक है? So ये तो एक तुम्हारे पास यहाँ पे marks show हो रहे हैं. ठीक है? Now what I would want to do is to calculate average marks of this whole bunch of students that I have. So I have a total of 50 students here. ठीक है? मेरे पास total 50 students है, and I have the marks for each one of them. Now what I would want to do is I would want to calculate an average marks for this whole class. ठीक है? इन सब की average calculate. अब average का आपको पता है, if you were to do it on any calculator, what process would you follow? आपके पास average का एक simple formula होता है that you add all the numbers up. So आप क्या करेंगे? You'll do 81 plus 93 plus 69 plus 62 and so on all the way until this last number, that is 80. इन सब numbers को add करेंगे. Then whatever is the result, you will divide that result by 50. Right? That's what you would normally do, like for calculating a simple average. So let's think about this. So before I go to calculating the average for those 50 numbers, let me break it down the problem a little. And let's say I only start with these first 5 numbers. ठीक है? मैं देखता हूँ कि 5 numbers के लिए हम क्या कर सकते हैं. So calculation कैसे करते हैं? Remember, we start with an equal sign, right? That's the first step. You always remember whenever you have to type a formula, you start with an equal sign, and then you would add these numbers up. अब इसको आप add किस तरह कर सकते हैं? You'll go like 81 plus 93 plus 69 plus 62 plus 66. Right, this is how you would go about it. So आपने ये first 5 numbers को add कर लिया. This is exactly what you do on a calculator. आपने सारे numbers type in किए, बार-बार एक-एक करके, और आपने उन सबको add कर लिया. Right? So we get a total number here. तो आपको इस total number क्या और भी क्या करना है? आपने इसको brackets लगा के यहाँ पे, you want to divide it by 5 because we have 5 numbers. आपने इसको 5 से divide किया. You get this result that is 74.2.
So this is the average of these first 5 numbers that I have here. ठीक है, इनकी मैंने average calculate कर ली. It turns out to be 74.2. All right, I hope there are no issues until here. अब देखें, we started from this as well, as in we discussed last time as well. यहाँ पे मेरे पास number क्या नजर आ रहा है? 74.2. That's basically the output of whatever formula I have written there. ठीक है, अगर आपको देखना हो कि मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया था, you can either make this an active cell like this. Active cell का मतलब होता है आप उसको cell को select कर लें. Now this is your active cell. इस cell को जो आप select कर लेंगे, आपके पास ये ऊपर फॉर्मूला बार है. फॉर्मूला बार में यू कैन सी कि आपने एक्चुअली उसमें टाइप इन क्या किया हुआ. तो जो भी आपने अंदर लिखा होगा आपको ऊपर नजर आ रहा होगा उस फॉर्मूला बार क्या. ऑलराइट, एक ये तरीका देखने का कि आपके अंदर सेल के अंदर क्या है. द अदर वे इज यू कैन जस्ट एडिट दैट सेल. और एडिट करने के दो तरीके हैं. या तो आप डबल क्लिक कर दें उसके ऊपर लाइक दिस. ठीक है, आपको नजर आ जाएगा कि आपने क्या लिखा है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं. और there's a keyboard button that is F2. F2 जब आप प्रेस करते हैं ना on your keyboard, उस सेल के ऊपर जाके if you press F2 आप उसको एडिट कर सकते हैं like this. ठीक है, so these are some helpful buttons that you should remember जो आपको बार बार यूज करने होंगे. So as I said last time, I'm going to basically tell you about some of these shortcuts as we go along in the course. So this is how we can calculate the average. Now, what was the problem of that we discussed last time if we were to do calculation like this? So anyone who can respond to this, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये सारे numbers खुद से इस तरह से type कर दिए हैं और मैंने divide कर दिया इसको 5 के साथ. अब इस तरह से formula के अंदर ये numbers type करने में क्या issue है? Anybody who can tell me? This is something that we discussed towards the end of the last class. So क्या issue है इसके अंदर? Why should we so is it a good idea to put in numbers like this and add them up like this? Anyone? ये इसमें ऑटोमेशन नहीं है. अगर वो फील्ड चेंज होती हैं तो हमें दोबारा जो है ना वो नंबर मतलब फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा. Exactly. So let's say आपने जो है ये values जो है, so let's say this is a regular process. ठीक है, आपको हर month आपकी टेस्ट लेते हैं और यही 50 स्टूडेंट्स हैं. let's say आप यहाँ पे इन्हीं मार्क्स को ना आप what you want is कि आप सिर्फ ये मार्क्स को चेंज कर दें सबको और बाकी आपने जो भी कैलकुलेशंस की हुई हैं यहाँ पे they automatically update. अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर इस तरह से नंबर्स टाइप करेंगे ना, the problem is going to be कि अगर आपके नंबर फॉर एग्जांपल 81 की बजाय let's say in the next month ये 91 हो जाए और आपने यहाँ पे अपडेट करना था और आप अपनी सारी कैलकुलेशंस चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाए. आपने यहाँ पे मार्क्स तो अपडेट कर दिए लेकिन देखिए एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं आया बिकॉज ये जो नंबर्स यहाँ पे टाइप इन किए आपने they're not linked to that cell in any way. ठीक है, वो किसी भी तरह से उसके साथ linked नहीं है. So a better idea would be कि आप उन सेल्स को रेफर करें. आप इन सब सेल्स को लिखने के बजाय इस तरह से what you would want to do is कि आप एक एक सेल को ऐड करें. इस तरह से जो भी आपने सेल यूज किया है अपने फॉर्मूला के अंदर आप उसका रेफरेंस यहाँ पे डालें. So for example I can put in B2 like this. So this is B2 plus B3 plus B4 plus B5 plus B6. Right? I add all these numbers up as in इस तरह से मैं cell references के through and I close the brackets. So it's exactly the same thing as before. मैंने सिर्फ क्या किया, numbers की बजाय मैंने उन cells को refer कर दिया. ठीक है, उन cells के addresses को refer कर दिया. I close the formula. अब देखिए मैंने पहले अगर 81 लिखा हुआ था यहाँ पे, I get the same average, that is 74.2. However, if I were to update this and make it 91, it will automatically get
update it like this. Okay. Okay, so let me just respond to some messages on WhatsApp. Sorry, so I'm getting some messages that why hasn't the class started? So, I'm sorry for the disruption. Just give me 1 minute. Okay, did you guys have any issues joining in the class? Mudabbir, you just joined a few minutes ago. आपको कोई issue तो नहीं हुआ class join करते हुए? No, sir. Submission. So I didn't have any issue. I'm sorry, I can't hear you. Anybody else? Some people are getting. No, I didn't have any issue. Okay, some people are actually getting this error. Ke, please wait for the host to start this meeting. Any idea why this could happen? Yeah. You have to allow them to enter. Yeah, but they're not in the waiting room either. Uh-huh. उनको error ये आ रहा है कि the class is not started yet. Then they must have been in some other class, maybe by mistake. Yeah, let me just try again. Looks the meeting ID and password seems to be correct. Okay, this is very weird actually. Yeah. Okay. Is it okay if I just end this class right now and restart it? Can you please all join in again? There seems to be some issue with this session. Some people are getting some errors. Okay, no, I think it's okay. It's probably a problem at their end, and they have indeed joined in now. Okay. Aisha, Aisha, can you hear me? Yes, sir, I can. Okay, can you please explain आपको issue exactly क्या आ रहा था, because Shagufta is also having the same issue. I don't know, sir. कनेक्ट नहीं हो रहा था, जैसा शगुफ्ता की स्क्रीन पर है ना वैसे ही था. अब मैंने दोबारा ट्राई किया तो हो गया. Okay. Acha, let me try again.
Okay, I think it works for her as well. Okay, so sorry for the disruption. So let me continue with this. So those of you who have just joined, we can discuss it towards the end again. लेकिन हमने इतना खास अभी बहुत detail में discuss नहीं किया. I was just building up to something. So I hope you can just continue from here. Otherwise, you always have the recording to fall back on as well. So this is what we can do, right? हमने references दे दिए sales के और हमने end पे divide by 5 कर दिया, right? So this is one idea. Any problems that you think are still there in this formula that might cause some problems for us in any way? Any idea? I would want some quick responses. I would try to make this a bit more interactive ताकि आप लोग सिर्फ सुन नहीं रहे हो, you're at least thinking as well, thinking with me. आप उसको साथ साथ जो है खुद भी try करें, और if you have any problems you make sure you ask as well, और आप साथ साथ इसको सोचने की कोशिश करें कि why we are doing what we are doing. ठीक है, so what could be a problem here? मैंने इस तरह से यहाँ पे जिस तरह से फॉर्मूला लिखा है, any further problems that you think could happen in future? Any idea? No idea. Yes, Samir? I'm saying no idea. Okay. अच्छा, so the first thing is, अभी तो हमने यहाँ पे देखे कितने numbers add किए हैं. We have added 5 numbers here, right? Now, what if we wanted to do this for not these 5 numbers, but all those 50 numbers? What would you have to do? You would have to add those numbers like this, like B6, then B7, plus B8, plus B9, and so on. You'll keep on going until you get to the last number there. So आपको 50 times ये add करना पड़ेगा like this, right? This is what you would have to do if you were using a simple calculator. आपको एक एक value type in करनी पड़ेगी और उसको एक एक करके इस तरह से sum करना पड़ेगा, right? This is where Excel's built-in functions come in handy. ठीक है? So instead of having to type like this, which is perfectly okay for a small set of numbers, कि आप इस तरह एक एक करके add कर लें इनको. However, when you have to add a large bunch of numbers, it's not a very good idea कि आप एक एक number को इस तरह से individually add कर लें. ठीक है? A better idea could be to use a built-in function of Excel that is called the sum function. ठीक है? तो हम इसके लिए क्या करेंगे? You will start with an equal sign. आपके पास एक फंक्शन है एक्सेल का that's called sum. जब इसके ब्रैकेट्स ओपन करते हैं ना like this, so आप जब भी कोई फॉर्म इस तरह से built-in function यूज करेंगे, आप वो फॉर्मूला लिखते हैं and then you open brackets. That's going to be the standard process every time. जब आप ये brackets open करेंगे, you're going to see something at the bottom here, right? ये क्या आपके पास आ रहा है? Number 1, number 2, and then you have a comma and then you have 3 dots. ये जो bracket के अंदर numbers आ रहे हैं, you can think of it like inputs to this function. कि आप इस function के अंदर ये सब input कर रहे हैं, right? So you're inputting number 1, number 2, number 3, and so on into this formula, और ये आपको एक output देगा. ठीक है? So remember bracket के अंदर इनको क्या कहते हैं? Input, या इनको कभी-कभी आप ये भी कहेंगे, इनको हम arguments भी कहते हैं. So this is the first argument, this is the second argument, and so on, right? So what we can do here is this function can work multiple ways. So एक तो ये तरीका आप एक नंबर को इस तरह से करें. So B2, comma, B3, comma, B4, comma, B5, and so on. अब इस तरह से एक एक करके करते जाएं. Let's do it for the first 5 numbers. B6 तक,
इनको सम कर लिया, ठीक है, एंड देन डिवाइड बाय 5 जो हमने पहले भी किया था, एंड वी सी इट वर्क्स जस्ट एज इट वाज वर्किंग बिफोर। आपने सम फॉर्मूला अप्लाई किया वहां पे, इट एड्स ऑल ऑफ दीज नंबर्स अप और ये आपको एक आउटपुट देगा, जो भी आपकी आउटपुट आती है उसको 5 से डिवाइड कर दे, ठीक है। So this is how the sum formula could work. This is one way it works, right? एक और तरीका इसका ये होता है कि आप इसको एक एक नंबर इस तरह से टाइप एक सेल का रेफरेंस देने के बजाय आप इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप उस इन सब सेल्स को एक ही टाइम पर इकट्ठा सेलेक्ट कर सकते हैं। So आपने क्या किया, आपने ये सम फॉर्मूला लिखा, ये ओपन द ब्रैकेट, फिर आपने क्या किया, आपने ये सारे नंबर्स जो आपको ऐड करने हैं आपने ऊपर से स्टार्ट किया, क्लिक किया वहां पे, यू होल्ड योर क्लिक फॉर अ व्हाइल एंड यू गो डाउन एंड यू सेलेक्ट ऑल दीज नंबर्स, ठीक है। आप बस ऊपर देखिए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, आपने सेलेक्ट कर लिए B2, you have a sign colon there and then you have B51। इसका मतलब ये है कि B2 is the starting point and B51 is the end point, और इनके दरम्यान में जो सारे सेल्स हैं आपने उन सबको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। एंड देन यू क्लोज द ब्रैकेट्स व्हिच बेसिकली सिग्निफाइज कि आपने फॉर्मूला को क्लोज कर दिया है, एंड यू प्रेस एंटर। तो यहाँ पे देखें हमने क्या किया, उस सारे नंबर्स को ऐड कर लिया just by writing this small formula like this, ठीक है। जब आप सम कर लिया तब डिवाइड कर दिया आपने, टोटल नंबर कितना है, we have 50 students now, so डिवाइड हम करेंगे इसको 50 से, this gives us the average for all those 50 numbers like this, ठीक है। उन सारे 50 नंबर्स की हमने एवरेज की, B2 से लेकर जो B51 के अंदर है सब की, उनको हमने 50 से डिवाइड कर दिया and we get our average for all 50 students like this, ठीक है। Any problems until here? इस सबको क्लियर है? I would want some quick responses, please, so we don't spend too much time on relatively simple things. Okay, so I'm getting some responses on the chat box. Okay, great. So this is how you can actually do this average using a simple formula like this. Now there's another problem with this, and that is कि मैंने अभी कहा था कि आपको आपके पास formulas के अंदर numbers नहीं होने चाहिए, right? You should not have numbers like this. मैंने 50 यहाँ पे hard code किया हुआ है खुद से, right? मैंने 50 यहाँ पे खुद से डाला हुआ है. Now I don't want कि मैं यहाँ पे अगर let's say in future if I were to for example add some more numbers here, मैं यहाँ पे कुछ और students add कर देता हूँ 51, 52 और यहाँ पे उनके भी marks यहाँ पे for example कुछ enter कर देते हैं for future. I would want कि ये मेरा formula जो है ये automatically उनको भी incorporate कर ले, right? So I could have for example a range कि मेरे पास total increase करते करते it's likely कि मेरे पास हो सकता है future में 100 तक students चले जाएं, right? Just as an example. So what I can instead do is कि मैं ये sum formula में I can go a bit down there. तो यहाँ पे इस formula के अंदर I can select let's say 20 more cells to have room for more students. तो मैंने 20 और cells यहाँ पे sum formula में भी select कर लिए. So I'm going from B2 to B71 now, right? Now बाकी cells में तो नीचे initially कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, right? They were all empty cells. So it does not really matter even if I'm adding those cells here. तो वो 0 0 ही add होगा. So it's not really making any difference there. However, यहाँ पे जहाँ पे मैंने 50 खुद से टाइप किया हुआ है, यहाँ पे भी what I can do is I can say I can ask Excel to count those cells automatically as well. उसके लिए मेरे पास एक formula होता है that's called count. ठीक है, count क्या करता है, ये देखिए आप पास जब भी आप ये formula टाइप करते हैं ना, आप पास
उस टेक्स्ट के साथ जितने भी फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं आप बस नीचे वो भी आ जाते हैं, ऑप्शंस आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल, this is the formula that I'm going to be using, count formula. There's some other formulas below as well. We are going to discuss some of them in our next classes as well. So we have count A, count blank, count if, count ifs. You can try to experiment with those before we actually do it. और आप देख सकते हैं वो formulas क्या करते हैं. But for now, let's focus on count. और यहाँ पे देखिए आपके पास एक description भी आ रही है right side पे. So count formula क्या करता है? It counts the number of cells in a range that contains numbers. तो आप जो भी range देंगे उसको, उसके अंदर जितने भी cells के अंदर कोई numbers पड़े होंगे, ये उनको count कर लेगा. Like so, right? So if I were to do it like this, मैं count का मैं bracket open करता. Again, I have some possible inputs here. तो input में यहाँ पे क्या दे सकता हूँ? मैं ये सारे सेल्स जो मैंने B2 से लेकर B71 तक वहां पर इनपुट किया था. You can look at it in the formula bar here. मैंने यहाँ पे भी इनको इनपुट कर दिया. Then I can close the brackets, right? When I close the brackets, you see this formula now does the work for me automatically, right? इसने मुझे ये देखें total average calculate करके दे दिए. So it's adding all the numbers from cell B2 to B71 and it's dividing by the number of students that we have, and that's basically calculated using this count formula. So जहां जितने भी cells में आपके पास यहाँ पे numbers पड़े होंगे उन सबको count कर दे. So let me just actually show you what these cells are doing individually as well. So मैं यहाँ पे इन formulas को copy भी कर लेता हूँ यहाँ पे, just to show you what they're actually doing. So this is what the sum function is doing, and this is what the count function is doing. So देखें यहाँ पे मैंने sum apply किए, इसी तरह से इस cell के अंदर मैंने count apply किया. So देखें ये sum formula है, ये sum क्या करे? It's adding all these numbers here. अब ये नीचे जो blank cells हैं उनमें of course zeros हैं एक तरह से, तो उनको भी add करके doesn't make any difference there. और count में देखें मैंने कितने सेल सेलेक्ट किए थे? B2 से लेकर B71 तक. ये नीचे वाले सेल्स को काउंट नहीं कर रहा वो. Why? Because they don't have any numbers there, right? वो सिर्फ यहाँ तक काउंट कर रहा है, and we have 52 numbers until here. So देखें count आपको result क्या दे रहा है? It's giving you 52 as the result. If I were to, for example, add another student here, so let's say student number 53, और उसके कुछ marks भी मैं enter कर देता हूँ यहाँ पे. So let's say the student got 75 marks. And if I go back on the top, जहाँ पे मैंने वो formulas typing किए थे, you see everything is updated automatically. ये sum भी आपका खुद से update हो गया, ठीक है? Count भी आपके देखें 53 हो गया now instead of 52, और ये ऊपर average formula भी automatically update हो गया है like this. तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं. आप यहाँ for example, अब आप इस तरह से अगर आप step by step करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं कि आपने एक सेल के अंदर sum कर दिया, एक और सेल के अंदर आपने count कर दिया, just to show it visually कि how everything is happening, और फिर आपने एक और सेल के अंदर you said कि आप ये कर दो, ये sum को divide कर दो by this count, right? आपने step by step करके third step के अंदर एक average calculate कर ली, and that gives you the same result as you got on the top there. ठीक है? Any questions until here? Is this clear to everyone? Yes, clear. Okay, great. Now, before I tell you something about referencing, let me actually tell you another function
that some of you might already know and you might be thinking हम ये क्यों use कर रहे हैं sum or count जबकि हमारे पास एक direct formula भी होता है. So we're going to look at that. So average calculate करने के लिए we also have a direct formula, and as you might just guess, उस formula को हम कहते हैं average. So that's what the name is in Excel, average. Right? जब आप ये लिखेंगे average, you can see the description here as well. It says it returns the average, that's arithmetic mean. So those of you who have who remember maths from your early years and from your undergrad, आपके पास different kinds of averages होती हैं. So the most common one is arithmetic mean. So that's what we're talking about. We're not talking about the other kinds of means like geometric mean or harmonic mean or anything else. So remember, we're talking about arithmetic mean here. That's the normal average on the lete. So it returns the average of its arguments. So arguments का क्या मतलब होता है? जो भी आपकी input होती है उस function के अंदर, which can be numbers or names, arrays. So we can ignore the other things for now. We might discuss some of them in future. So just focus on it can be numbers or it can be references that contain numbers. So that's what we're talking about. हम reference देंगे cells का जिनके अंदर numbers पड़े हैं, right? So average, हमने bracket open किया. It again has some inputs here, some arguments in this function. और arguments यहाँ पे क्या हैं? यही सब जो हमने पहले भी देखे थे. We can add, we can input all those cells here. मैंने थोड़ा सा ये increase किया यहाँ पे. I'm going until 71, remember, because I want to give space for any future entries as well. कि अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी students add करता हूँ, for example, I can extend it all the way to the whole column as well, ताकि जितने मर्जी maximum numbers add हो जाएं. But for now, let's say for the next year, I'm not expecting any any more students than these 20 students. So this will work fine for me. So I can, so I've given this range from B2 to B71. I close the bracket and I see here, this formula directly gives me the average, and it's the same thing that I got using that longer method above as well, right? तो आपके पास एक direct जो है average formula भी होता है. You can use that to calculate averages like this. ठीक है? I hope it's clear to everyone. So we talked about the sum formula, we talked about the count formula, we talked about the average formula, right? So all of these formulas work well like this. Achha. Now we also have some other common statistical formulas. So I'm going to quickly tell you about them. So it's nothing very complicated when it comes to applying these formulas. So I'm going to hide some columns just to reduce the clutter. So this is, so we have this bunch of numbers, and we can actually calculate all these statistical measures. Some of you might have forgotten about some of them, but I'm sure you have heard of them at some point in your life. I'm going to very briefly explain in interpretation क्या होती है, लेकिन I'm not going to go into too much detail. So let me discuss all these different statistical measures that you can calculate, that you can use formulas for in Excel based on these numbers that you have. So मेरे पास ये सारे students हैं और उनके marks हैं. What I want is, I want the average marks, that's the mean marks, mean average, एक ही बात है. I want the median. Median क्या होता है? Median is basically कि आप सारे numbers को arrange कर दें एक order के अंदर, ascending or descending. तो उनका जो middle number होगा, that's basically called the median. इसकी different जो है reasons होती हैं. Sometimes the mean gives you a better
average in the sense कि आपको data का बेहतर idea होता है, and sometimes median gives you a better average, a better representation of the data. So again, that's something that you might have heard at some point in your statistics class. But in this, for now, we're just going to discuss कि हम किस तरह से calculate कर सकते हैं Excel. ठीक है? So mean के लिए we have this formula that's called average. Average में क्या करेंगे? We can just input all these numbers like this. ये सारी हमने range दे दी. So we can extend it if we want. We can just input like this as well. जितने तक वो cells हैं, ये अपने इनकी average calculate कर ली. Right? So this is the formula for mean or average. Right, we're talking about arithmetic mean here. ये आपके पास एक formula, ठीक है? Median के लिए, again, very easy to remember. It's called median. इन सबको cells को select कर लिया. So remember what happens is it orders the marks in ascending or descending order. उसको sort करता है. जो भी middle number है उन सब के दरमियान में, that's called the median. ठीक है? अच्छा, then you have the maximum marks. Maximum के लिए we have this formula called max in Excel, MAX. Again, इसके भी arguments, इसके भी inputs वही हैं. आप उन सारे cells जो भी marks हैं आप उन सबको आप select कर लें इस तरह से. You close the brackets and it gives you the maximum marks in those in that list. ठीक है? अच्छा, so it's time for another shortcut here. इसी तरह मैं आपको बताता हूँ भी. इस minimum के लिए एक formula होता है min. So remember अभी मैं क्या कर रहा था यहाँ पे? मैं इसको click करता था like this, और मैं इसको जाके पूरे cells को select करता हूँ like this. ठीक है? So in this case, I only have about 50 cells, so it's not much of a hassle. इस तरह से आराम से कर सकता हूँ मैं click करके इन सब cells को select कर सकता हूँ. But let's assume you have much larger data. So let's say I have like 100,000 rows here. I mean, सबको इस formula के अंदर input करना होता. What I would have to do is कि मैं इसको select करूँ यहाँ पे, then I keep going down like this. और मैं इसको scroll करता जाऊँ, and at some point I will reach that 100,000 mark. But until then, I'll have to just keep scrolling like this. Okay, which is not a very good idea. So we have a shortcut here. आप यहाँ पे आपने formula type करना शुरू किया. Now what you can do is you can go to the first cell there. आपने first cell पे गए, ठीक है? आपने इसको active कर लिया. Now you press Control, press Shift. ठीक है? Control Shift दोनों आपने press कर लिए. Keep them pressed, hold them, and press down. I guess I'm not sure मैंने last time बताया था कि नहीं, but if I didn't, you just try it now. Control plus Shift plus down. तो वो क्या करेगा? नीचे end तक जहां तक आपके पास डेटा पड़ा हुआ है उन सब cells को select कर लेगा. Unless you have any blank rows दरमियान में, तो दरमियान में कुछ blank है तो वहां पे रुक जाएगा, आपको दोबारा से नीचे down press करना पड़ेगा. But if there are no blank cells, it's going to just go down until the end of the data. ठीक है? तो मैंने Control Shift down press किया तो उसने मेरा सारा वो सारे cells select कर लिए until the end. And I can close the formula here like this, and I get this number. The minimum marks in this data are 47. जो मैंने यहाँ पे भी enter किए थे end पे, मैंने खुद enter किए थे. If I change this, क्योंकि आप लोगों ने कुछ लोगों ने शायद ना किया हो ये, so let's say 70 इसको कर दूं ताकि जो भी original data के अंदर minimum marks थे वो show हो जाए. So this was what the minimum number was in the original data, and that turns out to be 60 in this case. ठीक है? So we calculated the mean or average, we calculated median, maximum, minimum. Now let's talk about range. अच्छा, ये जो चीज है ना ऊपर जो हमने किया है mean और median, ये आपको basically बताते हैं some
central aspect of the data. So for example, if somebody was to ask me कि अच्छा इस class में students ने कैसा perform किया, right? I would, if I were to summarize everything in one number, I would either say, I would either tell the mean or I would tell the median. Okay? It's some sort of a representation of the whole data, right? But it can also happen कि आपके पास दो different sets of data हो और उनका same mean हो. So for example, let me give you two examples here. So ये आपको कुछ statistics का concept भी आ जाएगा. It's very useful in practice. So let's say you have two sets of numbers. So this is set one. In fact, let me use this example that I often use with my students. So we have two companies. We have firm A and firm B. And they give their employees different salaries. Okay, so let's say entry level pay, they have different salaries that they give to their employees, to fresh graduates. So let's say we have some numbers there. So let's say 40,000. Let's say they hired 5 employees, both the firms. The first firm gave these different salaries to their employees, 30,000, 32,000. So let me actually change the format. अच्छा मैंने numbers का format change करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? Instead मैंने numbers को select किया. I can go there. I can select currency from there. ठीक है, मैंने currency select कर ली, but of course we don't get paid in dollars here. So हम क्या करते हैं जाके currency में गए. यहाँ पे we have more number formats option. ठीक है, more number formats में जाएंगे. So you have this dialog box opened like this, right? Now currency के अंदर आपके पास different options आ रही हैं right side पे यहाँ पे, ठीक है? आप एक तो इसके decimal places increase या decrease कर सकते हैं. हम इसको 0 कर देते हैं because आपको यहाँ पे rupees में at least you don't need to go into the decimal places. यहाँ पे symbol भी आप change कर सकते हैं. Instead of dollars, I can select for example PKR from here या rupees. We'll see हमारे पास यहाँ पे क्या option होती है. So नीचे जाते रहें तो you have this option somewhere that is PKR, right? So we can select this. तो ये आपका format change हो गया in numbers का, right? I can add the other numbers. So let's say 34,000, 38,000, 36,000, and 38,000. Or in fact, change it a bit. 32,500, 35,000, 37,500, and 40,000. So let's say in the last year, 5 employees were hired in this firm and they were paid these different salaries there. Okay. Okay, so let's assume we have another firm, and in this firm, in fact, it seems to be a bit low number, so let me increase it a bit as well. So मैं क्या करता हूँ इसको मैं plus 10,000 कर देता हूँ until here. अच्छा, so I have these salaries 40,000 से लेकर 50,000, ठीक है? I have another firm and they pay their employees like this. So they have one person who is paid 25,000. They hired another person who was paid 35,000. Another person was paid 45,000. Another was paid 55,000. Another was paid 65,000. अब आप इन दोनों की average करते हैं ना अगर, so let me calculate the average for both of them, or the mean for both of them, and the median for both of them. Remember what the formula is going to be. Average for
द मीन, ये मैंने सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, उनकी एवरेज कर ली, ठीक है। इसी तरह से मीडियन के लिए आई कैन डू दिस, ये मैंने इन सेल्स का मीडियन कर लिया. So in this case, both the mean and the median are the same because the middle number is also 45,000 here. ठीक है, mean और median दोनों same आ रहे हैं. अच्छा, अगर मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पे राइट साइड वाले सेल्स के ऊपर अप्लाई करना हो ना, one way would be that I write this formula again like this. यहाँ पे मैं average formula दोबारा से लिखूं, ठीक है. जब अच्छा by the way, जब आप ये टाइप कर रहे होते हैं ना, if I start typing like this, अगर मेरे पास ये फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है वो फॉर्मूला जो मैंने यूज करना है, या कहीं पे भी आ रहा है इस लिस्ट के अंदर, मैं क्या कर सकता हूँ, उस फॉर्मूला पे जा सकता हूँ यूजिंग दिस अप डाउन बटन ऑन माय कीबोर्ड, और उस पे जाके आई कैन प्रेस टैब ऑन माय कीबोर्ड. टैब प्रेस करूंगा तो वो क्या करेगा, इट विल ऑटोमेटिकली कंप्लीट द फॉर्मूला फॉर मी. ठीक है, इट्स जस्ट फॉर बिल्डिंग स्पीड इन फ्यूचर. आप सिर्फ फॉर्मूला लिस्ट में आ जाए, आपने उस पर जाना है और टैब प्रेस करते हैं, इट विल ऑटोमेटिकली कंप्लीट द फॉर्मूला फॉर यू. ठीक है. अच्छा, वन वे वुड बी कि मैं एवरेज फॉर्मूला स्टार्ट करता हूं एंड आई अप्लाई दिस हियर एज वेल. एक तो ये तरीका है, और इसमें मैं मीडियन में दोबारा करूं. एक और तरीका इसमें ये होता है, आपने इस फॉर्मूला को सेलेक्ट किया, यहाँ पे इन सेल्स को सेलेक्ट किया इधर से. अब आप इसको इन दोनों सेल्स को जब सेलेक्ट कर लेंगे ना, एट द बॉटम राइट कॉर्नर हियर, जब मैं अपने कर्सर को लेकर जाता हूं, देखें मेरा कर्सर चेंज होता है. अभी देखें इट्स वाइट इन कलर व्हेन इट्स हियर, एंड व्हेन आई टेक इट टू द बॉटम राइट कॉर्नर हियर, ये चेंज हो जाता है थोड़ा सा. इट becomes a bit smaller and also it changes its color to black here. इसका मतलब है कि आप उस bottom right corner पे exactly पहुंच गए हैं. यहाँ से आप इसको drag कर सकते हैं. इसको क्लिक करें और इसको right drag कर लें. इसको drag करेंगे तो क्या होता है, let's try and edit these cells और देखते हैं यहाँ पे formulas में क्या changes आए हैं. अच्छा, मैं इसमें ना formulas show कर देता हूँ यहाँ पे जो मेरे पास written है. Yeah, so this is what I have. यहाँ पे मैंने देखें originally formula क्या था, average of all the cells from L12, देखें this is L12 up to L16, that was this cell. ठीक है. जब मैंने इसको extend किया right side पे using this bottom right corner, मैंने यहाँ पे इसको drag कर लिया right side पे, देखें क्या change हो गया इस formula के अंदर. ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, नेक्स्ट आपने इसको राइट मूव किया ना वन सेल, तो ये सारी जो इनपुट्स थी वो उनको भी उसी तरह से उतना मूव कर देगा टुवर्ड्स राइट. देखें यहाँ पे उसने, यहाँ पे क्या हुआ है, एल की बजाय यहाँ पे एम कॉलम के अंदर आ गया. ठीक है. तो अब क्योंकि ये वन सेल आप राइट मूव किए थे फॉर्मूला को, आपकी सारी जो इनपुट्स हैं वो भी वन सेल राइट मूव हो जाएंगे. सिमिलरली मीडियन में भी देखिए वही हुआ है. In the original formula, I have L12 up to L16. यहाँ पे it is automatically updated to M12 up to M16. ठीक है. So I'll discuss this in a bit more detail अभी थोड़ी देर में. But before that, let's come back to the concept that I was telling you. देखिए मैंने दोनों का मीन कैलकुलेट किया, दोनों के मीडियन कैलकुलेट किया. आई एम गेटिंग इट टू बी द सेम फॉर बोथ द फर्म्स. फर्म ए की भी वही एवरेज सैलरी है, फर्म बी की भी वही एवरेज सैलरी है. डज दैट मीन बोथ द फर्म्स आर पेइंग देयर फ्रेश ग्रेजुएट्स द सेम वे? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही तरह से पे करते हैं. कैन आई, इफ समबडी वाज टू आस्क मी कि दोनों फर्म्स अपने फ्रेश ग्रेजुएट्स को कैसा पे करती हैं, इज इट करेक्ट टू से कि बोथ ऑफ देम हैव एन एवरेज सैलरी ऑफ 45,000, सो दोनों एक ही तरह से अपने एम्प्लॉइज को पे करती हैं, और इज देयर एनी डिफरेंस? एनीवन? दोनों की रेंज में काफी फर्क है.
दोनों की रेंज में काफी फर्क है. इसका मतलब है कि दोनों की सैलरीज के स्प्रेड में काफी फर्क है. तो अगर आप फर्म ए में हायर होते हैं, यू कैन प्रीटी मच एक्सपेक्ट योर सैलरी टू बी विद इन अ वेरी स्मॉल रेंज, एक तरह से कि अच्छा आपको पता है कि 40 से 50 के दरमियान में कहीं पे होगी. So that's you can be more sure about it. But about firm B, even though the average salary is the same, but they pay but the salaries that they pay to their employees are much more varied. So you cannot be as sure about them. ठीक है, they might be more considerate of your exact qualifications, your exact skills, और आपको उसकी basis पर they might have the room to change your salary significantly. ठीक है? So this information is not captured in mean or median. इसके लिए आपके पास कुछ different measures होती हैं जो आपका spread measure करती हैं data. ठीक है? One thing is called range. Range क्या होती है? Range is basically is simply the maximum minus the minimum. इसका direct formula नहीं है वैसे Excel के अंदर. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ आप मैक्स में से जो भी आपने मैक्स कैलकुलेट किया ऊपर, उसमें से आप ये मिन माइनस कर दें, यू गेट द रेंज दैट इज 40. ठीक है, अगर आपने मैक्स और मिन अभी ऊपर नहीं कैलकुलेट किए हुए तो आप यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर इनपुट कर दें. सो वी कैन डू मैक्स. ठीक है, मैक्स ऑफ ऑल दोज नंबर्स माइनस, या आपके ऊपर फॉर्मूला नजर आ रहा है, यू सी, मैक्स ऑफ ऑल दोज नंबर्स माइनस द मिन ऑफ ऑल दोज नंबर्स. So again, on sub cells का मैंने min भी कर लिया like this. So max minus min, this is going to give me the range. ठीक है, तो ये आपको एक तरह से डेटा का स्प्रेड बता देता है कि कितना ज्यादा वेरीड है डेटा. All right? So एक तो ये तरीका होता है स्प्रेड मेजर करने का. Then we have another. In fact, let me just remove variance from here. That's more statistical, और इसकी as such interpretation direct नहीं होती. But those of you who know about it, मैं उसका formula वैसे आपको फिर भी बता देता हूँ. But I won't go into explaining what that means. एक आपका standard deviation एक measure होती है in statistics. Standard deviation आपका measure करता है कि आप एक simple interpretation इस तरह से हो सकती है कि mean से एवरेज से आपका डेटा कितना दूर है. रेंज क्या करता है? रेंज आपको सिर्फ ये करता है मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर देता है. स्टैंडर्ड डेविएशन एक मेजर ऐसे होती है व्हिच कैन रफली मीन कि एवरेज से आप कितना दूर हैं ऑन आपका डेटा जो है वो ऑन एवरेज कितना दूर है. ठीक है, दैट्स व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन मींस. इसका जो फॉर्मूला होता है एक्सेल के अंदर, that's the standard deviation, STDEV. उसके नीचे different variants हैं. They vary according to different contexts, population, sample. But I'm not going to detail there. आप कोई भी इसमें से use करें standard deviation .p. Let's say मैं ये use करता हूँ. Again, it's the arguments, the inputs are the same. आपने सिर्फ numbers input किए और आपको ये एक मेजर मिल गया कि ऑन एवरेज आप ये जो आपका मीन है उससे आप कितना दूर होते हैं. ठीक है, दिस इज अ मेजर ऑफ दैट. अगर आप ये दोनों यहां पे कैलकुलेट करें इन दोनों फर्म्स के लिए, रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. सो लेट मी कैलकुलेट दीज नंबर्स. इन दिस केस द मैक्स माइनस मिन, ये मेरे पास 10,000 इसकी रेंज आ रही है. इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं यहाँ पे. I'm getting 40,000 here. Similarly, standard deviation, I get some number here for standard deviation, and if I extend it here, I get another number here for standard deviation. तो देखिए आपकी रेंज in the first case was 10,000, in the second case was 40,000. So it's telling you कि firm B की जो salaries हैं they are much more spread out. Similarly, standard deviation is also telling you a similar thing कि इसके standard deviation बहुत कम है as compared to the standard deviation of
the firm B. इस तरह ये spread measure करने के लिए एक और चीज होती है, that's called variance. Variance आपके standard deviation का basically square होता है, इसका direct formula भी होता है, that's called VAR. डॉट पी हम अप्लाई कर लेते हैं, एक इसके वेरिएंट जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे. इट आल्सो गिव्स यू नंबर लाइक दिस एंड इट डजंट हैव डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन, लेकिन आप कंपैरिजन में इसको भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई वर टू कैलकुलेट वेरिएंसेस हियर, जो मेरी वेरिएंस फर्स्ट डेटा की होगी, इट्स गोइंग टू बी स्मॉलर देन द वेरिएंस ऑफ दिस सेकंड डेटा देयर. ठीक है, सेकंड डेटा की वेरिएंस जो है मेरे पास ज्यादा होगी क्योंकि उसका स्प्रेड ज्यादा है और फर्स्ट डेटा की कम होगी. सो दीज आर द डिफरेंट functions that you can use as far as statistical calculations in Excel are concerned. ठीक है, any questions on this? So I'm going to show these formulas to you in case you are trying to copy them on your end. ये सारे formulas जो मैंने type in किए हैं यहाँ पे, you can have a look at them. I'll give you a couple of minutes to just digest it, maybe try it on your own end, and let me know if you have questions. And we'll just discuss one more concept for today, then we'll end, and I'll open for more detailed questions after that as well. अभी आप ये try कर लें if you haven't yet on your end, और कोई questions हैं आपके इसके ऊपर तो let me know. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर मैंने पूछना था, ये जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में जो फॉर्मूला यूज किया है उसके साथ डॉट पी है, तो ये पी स्टैंड्स फॉर पैरामीटर्स हैं या नहीं, actually statistics में ना you have different measures for when you are taking a sample out of a very large data. जब आप sample के ऊपर कोई calculation करते हैं तो वो यहाँ पे आप डॉट एस यूज करते हैं. अगर आपके पास पूरा डेटा है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास सारे स्टूडेंट्स का डेटा है. सो दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन. जब व्हेन यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द डेटा दैट यू आर कंसर्न्ड अबाउट, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, सारे डेटा पॉइंट्स और आपके पास हैं ऑलरेडी, उसके अंदर यू यूज डॉट पी. दैट स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन. But again, you don't need to go into too much detail here if that's not what you work on. If statistics is not your is not what you use regularly, maybe it's not something to be be concerned about. But for those of you who are interested in statistics, just know that this stands for population. .p और sample के ऊपर आपने कुछ करना हो तो आपको एक और वेरिएंट नीचे आ रहा होगा, that's .s. उसके लिए आप ये .s यूज करते हैं. कुछ नीचे देखें डिस्क्रिप्शन भी आ रही होती है here. एक तो आपको डिस्क्रिप्शन का एक ये तरीका होता है, यहाँ पे देख सकते हैं. Another way is whenever you're typing some formula like this, आप ये formula टाइप कर दें, कोई जो ऊपर फॉर्मूला बार है that you see on top here, इसके साथ लेफ्ट साइड पे देखें आपके पास एक बटन नजर आ रहा है, that's FX लिखा हुआ है जहाँ पे. ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करें ना, इस पे आपको ज्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है. थोड़ी सी FX के ऊपर क्लिक करते हैं ना, आपको एक डायलॉग बॉक्स खुल जाते हैं एंड यू कैन सी हियर अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन. ये देखें आप, ये फॉर्मूला क्या करता है एग्जैक्टली, इट रिटर्न्स द एवरेज ऑफ इट्स आर्गुमेंट्स एंड सो ऑन. और फिर आप देख सकते हैं इसके जितने भी आर्गुमेंट्स हैं, जितने भी इनपुट्स हैं, आप एक एक पे जाके उनके डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं. इन दिस केस आपके आर्गुमेंट्स इतने खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट व्हेन वी कम टू सम अदर फॉर्मूलाज व्हिच विल स्टार्ट डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेशंस, उसमें आपके इनपुट्स जो हैं दे कुड बी डिफरेंट इनपुट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट्स. यहाँ पर सिर्फ नंबर्स है ना, वहां पे हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं. तो हम
यहाँ पे fx पे क्लिक करके देख सकते हैं कि हर इनपुट की डिस्क्रिप्शन क्या है। बस नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। फॉर एग्जांपल नंबर 3 पे गया हो तो उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, नंबर 4 पे गया हो तो उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, एंड सो ऑन। विल बी यूजिंग मोर ऑफ दिस लेटर। और नीचे ही आपको यहाँ पे देखें एक बटन आ रहा है हेल्प ऑन दिस फंक्शन। आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये एक्सेल की डॉक्यूमेंटेशन भी खुल जाएगी लाइक दिस, तो आपको ये नजर आ रहा है। और आप उसमें देख सकते हैं डिटेल में आपको एग्जांपल्स के साथ उसने समझाया होगा कि ये फंक्शन क्या करता है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है, सिंटैक्स एक्सप्लेन किया हुआ है, और फिर नीचे इसने कुछ एग्जांपल्स भी दी होंगी कहीं पे जाके। ठीक है, इसने नीचे एग्जांपल भी दी हुई है। Right, so you can make use of these things as well. Okay, any questions? Or should we move on? Okay, so is it all clear to everyone? Are you confused? Okay, so I'm hoping this no is an answer to to whether you have questions or not, and I hope it's actually clear to everyone. And that's a yes. Okay, great. So I hope everybody else has a similar response there. So if you don't want to speak, you can always type in the chat box at least, so I can see some yes there and understand that it's okay to move on from there. Okay, it's necessary to get some sort of feedback in online classes, otherwise आपको पता नहीं चल रहा होता, you can't even see anybody's expressions if somebody is confused or not. So it's better कि आप at least chat box पे you keep on responding when you're able to understand something. या आपकी question आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं if you don't want to speak. So that's one way to do this as well. So there's one thing that we need to discuss at the end of today's session. So let me unhide something that I used earlier. So इसको मैं side पे ले जाता हूँ. So I'll try and share this file at the end of the class as well. इसलिए मैं इसको थोड़ा सा organize भी कर लेता हूँ. Let me take it here. Or yeah, I had something यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ. I have, okay, got some information here. I can take this यहाँ पे. Okay. Now remember we discussed something like this in the last session as well. Like now I'm going to explain exactly what I did in the last class. मैंने वो formula के अंदर आपको कुछ dollar signs नजर आ रहे थे last time. Let's understand what they meant there. ठीक है? अच्छा. So I have this data जहाँ पे I have the marks of these students given. So I have all these students and सबके marks हैं. I want to calculate their percentage marks. ठीक है? अभी तो मेरे पास absolute marks हैं उनके. I want to calculate their percentages given that the total marks were 100 for this test. ठीक है? Now percentage का क्या तरीका, percentage find करने का क्या तरीका होता है? Whatever is the number of marks that you've got. Now by now you know कि आपने numbers खुद से type in नहीं करने हैं, आपने cells का reference देना है. ठीक है? So आप क्या करेंगे? You start with this equal sign. You give a reference to this cell. That's B2. ठीक है? आपने इसकी percentage calculate करनी है. For example, B2 divided by, आप क्या करेंगे? Divided by 100, because that's the total marks.
नाउ यू ऑल्सो नो कि आपको 100 यहाँ पे खुद से टाइप इन नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स पॉसिबल मे बी फॉर अ फ्यूचर टेस्ट आप टोटल मार्क्स आप डिफरेंट रखें, तो यू वुड वांट टू यूज द सेम शीट देयर एज वेल। आप सिर्फ चाहते हैं कि एक सेल हो जहां पे अगर आपके मार्क्स चेंज हो जाए, आप सिर्फ को उस सेल, एक सेल में आपको चेंज करना पड़े, आपको सारे फॉर्मूलाज जाके एक एक करके चेंज ना करना पड़े। सो दैट्स व्हाई यू वुड नॉट टाइप इन अ नंबर देयर, यू वुड गिव अ रेफरेंस देयर एज वेल। अपने टोटल मार्क्स लिख के रखे हुए हैं एक सेल के अंदर अलग से, आप उसको रेफर कर देंगे यहाँ पे लाइक दिस। सो मार्क्स डिवाइडेड बाय दिस टोटल मार्क्स, ठीक है। ये आपको क्या करेगा, डेसिमल में आपको एक रिजल्ट दे देगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको डेसिमल में रिजल्ट देगा, तो आपकी जनरल फॉर्मेट हो, आपको इस तरह का रिजल्ट मिला होगा ऑन योर एंड, राइट। अगर आप अपने एंड पे करेंगे B2 over F2 based on what I have on my screen, आपको ये 0.91 रिजल्ट मिलेगा, राइट। आपको डेसिमल में रिजल्ट मिला। आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस नंबर फॉर्मेट देयर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे पूरे कॉलम को जहां तक मुझे चाहिए, या मैं इनफैक्ट पूरे कॉलम को ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सी कॉलम को सेलेक्ट कर लिया मैंने, and I go there and I change the format to percentage. यहाँ पे percentage format select कर लिया, I get these, I get this result here, ठीक है। 0.91 change होके now it's 91%. I can also change the decimal places here, the number of decimal places। या बस होता है यहाँ पे दो buttons आ रहे हैं, this is for increasing the number of decimals and this one is for decreasing the number of decimals। मैं एक decimal let's say decrease कर लेता हूँ, I only want one decimal place in this case। अब देखिए मैंने एक सेल के अंदर इस तरह से फॉर्मूला टाइप कर लिया, ठीक है। नाउ वन वे इज कि मैं जाके हर सेल के अंदर दोबारा से फॉर्मूला टाइप करूं। सो B3 divided by F2, again I go to the next cell, B4 divided by F1, sorry, not F2, F1, and then I keep going on like this until cell 53। but you recognize it's not a very efficient way of doing this। आपको क्या 53 formulas type करने पड़ेंगे यहाँ पे, which is a lot, right। आप एक एक करके, अगर आपके पास बड़ा डेटा हो, 100,000 का डेटा हो, you cannot really do this कि आप जाके एक एक formula individually type कर रहे हो। this is where that dragging thing comes in handy, जो मैंने आपको भी पहले दिखाई थी। so what you can do is you can select this cell, go to the bottom right corner, आपके पास यहाँ पे इस तरह से ये प्लस साइन बन जाएगा in black color। आप उसको क्लिक करें और उसको ड्रैग कर लें इस तरह से। एक ये तरीका है, इसको क्लिक करके ड्रैग कर लें एंड तक। दूसरा तरीका ये है, आपके पास अगर उसके साथ कुछ डेटा पड़ा हुआ है लाइक दिस, आप इसको डबल क्लिक भी करेंगे ना उस बॉटम राइट कॉर्नर पे जाके, जब वो साइन चेंज होता है, इफ यू डबल क्लिक ऑन दैट, आपको वो खुद से एक्सटेंड कर देगा सारी इंफॉर्मेशन को नीचे until you have the data in the adjacent cell। so यहाँ पे देखें मेरे पास लेफ्ट साइड पे डेटा पड़ा हुआ था until this row 54, तो वहां तक उसने उस फॉर्मूला को एक्सटेंड कर दिया। however there's actually a problem here। जब मैं एक्सटेंड करता हूँ ना इस फॉर्मूला को, let me change the view a bit ताकि आपको फॉर्मूलाज नजर आए। देखिए फॉर्मूला में क्या कर रहा है, देखिए जैसे जैसे मैं नीचे मूव कर रहा हूँ, इट्स अपडेटिंग दिस फॉर्मूला फॉर मी। सो मैंने जब ड्रैग किया उसको, पहले क्या था, B2 डिवाइडेड बाय F1, राइट। मैंने उसको ड्रैग किया नेक्स्ट सेल के ऊपर, तो रिमेंबर मैं नेक्स्ट सेल पे मूव किया हूं, तो मैंने कहा था कि आपका फॉर्मूला भी उसी तरह से सेल्स को जो है ना नीचे मूव करता जाएगा। सो B2 की बजाय अब वो एक सेल नीचे आ गया, B3 पे आ गया। लेकिन F1 भी जो था वो पहले F1 था, यहाँ पे F1 की बजाय वो F2 पे आ गया। सिमिलरली नीचे जाऊं, उससे नेक्स्ट सेल पे जाता हूं मैं, यहाँ पे तो B4 था, which is exactly what I want,
लेकिन यहाँ पे भी F वाला जो F कॉलम जो है वो भी एक सेल नीचे आ गया, बट दैट्स नॉट व्हाट आई वांट, राइट? आर यू गेटिंग द आइडिया? यहाँ पे B कॉलम में तो मुझे नीचे मूव करना है, however I don't want this cell to move. ये जो यहाँ पे 100 है, I want to keep that fixed. I want to keep that fixed on 100 there. I don't want that cell to move downwards. ठीक है? अब इसकी वजह से मेरे पास ये एरर आ रहा है जो आपको शो हो रहा होगा. It's called division by zero error. So आपको बता रहा है कि in your formula at some point you are dividing by zero, which mathematically you cannot do. You cannot really divide any number by zero. That will give you an error. Okay, that's undefined. You can anything divided by zero, it doesn't make sense, right? You cannot divide any number by zero. तो वो किस वजह से आ रहा है? Because यहाँ पे आपका ये सेल भी नीचे मूव कर गया. अब ये सेल तो empty है. Empty means in numerical terms it has a zero in it, right? तो वो आप 93 को 0 से डिवाइड करें यहाँ पे, that's why you're getting all these errors here. Okay, at some point you also getting value error. वो इस वजह से आ रहा है कि देखें यहाँ पे आपका सेल नीचे मूव करते करते इस सेल पे आ गया था, जिसके अंदर कोई टेक्स्ट पड़ा हुआ है, राइट? अब आप एक नंबर को एक टेक्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं, it doesn't make any sense, right? So that's why you're getting this error. इसको value error कहते हैं, right? Value error different reasons की वजह से आते हैं. So this is one of the reasons that you have text here. ठीक है? अच्छा, so how can we fix this problem? What we can do is, जब ये फॉर्मूला हमने टाइप किया ना, इसमें दो डिफरेंट चीजें हैं. हम एक चीज को कहते हैं relative referencing और हम एक और चीज को कहते हैं absolute referencing. Relative referencing means कि जब आप इस तरह से ड्रैग करेंगे किसी चीज को तो वो उसके साथ साथ उसी तरह मूव करता जाए. वो उसके relatively जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं उसके relatively उसी तरह से वो आपके इनपुट्स भी नीचे जाते जाए. बी के कॉलम बी के केस में that's exactly the behavior I want कि मैं जैसे जैसे नीचे मूव करूं B2 के बजाय in the next cell I should have B3, in the next cell I should have B4, in the next cell I should have B5, right? So B के केस में I want relative referencing. However, कॉलम F के केस में जहां पे टोटल मार्क्स गिवन है, मैंने सिर्फ एक सेल के अंदर मार्क्स लिखे हुए हैं, है ना? इस केस में what I want is absolute referencing. Absolute का मतलब है I want fixed cell. I want to fix this cell कि ये जो F सेल है, F कॉलम के अंदर जो सेल पड़ा हुआ था, वो नीचे मूव नहीं करे. So I need to fix this cell. अब इसका तरीका क्या होगा? जब आप ये फॉर्मूला टाइप कर रहे होंगे, जब आपने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया है, F1 को जब आपने जिस पॉइंट पे सेलेक्ट किया अपने फॉर्मूला के अंदर या टाइप किया, आप क्या करेंगे? आप अपने कीबोर्ड के ऊपर F4 प्रेस कर देंगे. एक दफा आपने प्रेस करना है F4. जब आप F4 प्रेस करेंगे, you'll see this appear there. आपके पास रिमेंबर एक सेल की एड्रेस में दो चीजें होती हैं. एक आपका कॉलम होता है, that's F here, और एक आपकी रो होती है, that was 1 here. फर्स्ट रो के अंदर वो 100 पड़ा हुआ. अभी देखिए आपके पास दो डॉलर साइंस आ गए हैं यहाँ पे. जब आपने F4 प्रेस किया, you have two dollar signs appearing there. One is before F and one is before 1. जो F से पहले डॉलर साइन है, that means you are fixing the column. कि कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए as you move. और 1 से पहले जो है, इसका मतलब है कि रो भी मूव नहीं होनी चाहिए. so, अभी दोनों डॉलर साइन यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने इस सेल को यहीं पे फिक्स कर दिया. ठीक है? It cannot change. तो जब आप ये इसी को यूज करेंगे और इसको आप एंटर कर देंगे, there's nothing changing in this cell because वो तो आपने डायरेक्टली वही फॉर्मूला वहां पे टाइप किया था. However, जब आप इसको ड्रैग करेंगे,
अब इसको एक्टिव सेल कर लें और आप ये बॉटम राइट कॉर्नर पे आए दोबारा से और इस पर डबल क्लिक करें या उसको ड्रैग कर लें नीचे से नीचे तक एज वी डिड बिफोर। आप देखेंगे आपके नीचे वाले सेल्स अपडेट हो जाएंगे। सो लेट मी डबल क्लिक हियर, नीचे वाले सारे सेल्स आपके अपडेट हो गए, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट द डिफरेंस इज इन दिस केस। ये आपकी परसेंटेजेस सारी सही से कैलकुलेट हो गई हैं फॉर द होल कॉलम। Let's see what exactly has changed as compared to what we did before. Formulas देखते हैं जाके। So this is what has changed now. B column में जो numbers थे, जो B ये वाले जो cells हैं, as we go down, they are changing. So we're going from B2, B3, B4, B5, and so on. However, जो F1 था, हमने उसको fix कर दिया using these dollar signs. राइट हमने इन डॉलर साइंस को यूज करके F1 को फिक्स कर दिया, ठीक है। हमने F4 प्रेस किया था एक दफा, हमारे पास 2 डॉलर साइंस आ गए। जब हमने इसको ड्रैग किया नीचे, अब ये देखें ये सेल क्योंकि फिक्स हो गया था, इट्स नॉट चेंजिंग एनीमोर। F जब नीचे ड्रैग किया आपने, F1 जो है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। सो फॉर एवरी कैलकुलेशन हियर वी आर यूजिंग that same cell 100 from there और वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, तो आपकी परसेंटेज सारी सही से कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। So this is how we can apply formulas on columns like this। कि आपने टाइप कहाँ पे किया फॉर्मूला, देखिए मैंने सिर्फ इस एक सेल के अंदर फॉर्मूला टाइप किया, only in this one single cell। मैंने B2 को डिवाइड किया इस F1 के साथ एंड देन आई जस्ट टोल्ड एक्सेल कि मुझे B में तो मूव करना है नीचे और F में मुझे मूव नहीं करना। बस मैंने सिर्फ ये एक्सेल को बता दिया। मैं डबल क्लिक ऑन दिस और मेरे पास ये सारी परसेंटेजेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई, राइट। एंड नाउ यू सी द पावर ऑफ यूजिंग formulas and calculations like this कि let's say मेरे total marks यहाँ पे change हो जाएं, मैं 100 के बजाय let's say these total marks were 120 instead, everything is going to update automatically। So all these percentages you see they have updated automatically। मुझे कुछ भी जाके दोबारा से change नहीं करना पड़ा, मुझे सिर्फ एक सेल मैंने यहाँ पे change किया and everything updates automatically। So this is how you can use relative and absolute referencing in formulas like this, okay। So I'm going to stop here for today and I'm going to open the floor for questions। So if you have any questions let me know iske andar ya phir whatever we have covered until now। So is this clear what we just did at the end? It's a very important concept. It's going to stay with us until the end of the course. So please make sure that you understand it well. Relative referencing and absolute referencing. वो dollar sign से क्या हो रहा है, F4 press जब आपने किया, वो fix कैसे हो रहे हैं cells, और वो how they're helping us in these calculations. Okay, जब हम next complicated थोड़े से इससे relatively ज़्यादा complicated formulas के अंदर आएंगे, this referencing thing is going to be extremely important। Because हम कुछ inputs को, कुछ arguments को हम fix कर रहे होंगे, कुछ arguments को fix नहीं कर रहे होंगे, तो you have to make sure that you understand it well।